And listeners, PSL has ended. World T20 is around the corner. आज हम अपना फाइनल स्क्वाड पिक करने लगे हैं 18 member squad that would be from a player pool of round about 50 players. I have been joined by Aram, I have been joined by Zad, I have been joined by Imad. So thank you so much for joining. First of all, Aram, क्या हाल चाल है? Alhamdulillah, Ahmed. How are you doing? Alhamdulillah, really good. Glad to see you back healthy. I know you are still recovering, but anyway, glad to see you back on the screen. Zad, hope you are doing good. Jummah Mubarak जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आपको भी जुम्मा मुबारक Khair Mubarak. And of course, to conclude the table for today, Imad all the way from Karachi. Imad, thank you so much for joining. Yeah, thank you so much for having me, Emily. I hope it will be an exciting show, especially when we move from PSL to Pakistan cricket now. जब ऑफ कोर्स आप सारी डिस्कशन पाकिस्तान की टीम को लेकर ही होंगी. ओके गाइस, लेट्स हैव अ डीप डाइव स्ट्रेट अवे. ओके, जिस ऑर्डर में आप लोग बैठे हो फ्रॉम अरहम टू जैद देन इमाद, so we will go three players for each. Imad, oh sorry, Aram पहले तीन players आप फिर Zad फिर Imad. We will keep revolving until we are done with 48 players. फिर तीन प्लेयर्स बच जाएंगे तो वो वन बाय वन चलेंगे. सो अरम, आपके पास पहला प्लेयर्स ऑफिशियली टू किक ऑफ हैं वो हमारे पास आमिर जमाल एंड देन अराफात मिनाज एंड देन फहीम अशरफ. सो फर्स्ट ऑर्डर इज अराउंड द ऑलराउंडर्स. ओवर टू यू. Yeah, so I'll go by it quickly. In my opinion, Amir Jamal should be in the danger zone category. So should Okay, be Arafat Minhas. okay. Reason is Arafat ke because he did not get enough play time during the tournament. And Yeah. Faheem also had a sort of a subpar tournament apart from those few performances. So I'll also put him in the danger zone. I won't rule him Okay. out, but I won't consider him rightly. यप यप. ऑफ कोर्स हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना जिसकी जो कैटेगरी बनती है. ऑफ कोर्स दे कैन बी गिवन अ गो अगर कोई इंजरीज वगैरह होती है. ओके, एनीवे, अब आएगा मजा बिकॉज जैद का फेवरेट प्लेयर इमाद वुड बी पिक्ड. जैद, आपके पास इमाद एंड देन जहांदाद खान एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद नवाज प्लैटिनम कैटेगरी में थे पीएसएल के. सो ओवर टू यू, क्विक फायर. वैसे मेरा फेवरेट प्लेयर इमाद नहीं है लेकिन इमाद जाएगा आई पीएसएल थिंक के बाद हो गए. कह सकते हो चलो आप कह लो लेकिन इमाद जाएगा आई थिंक ऑन द प्लेन इमाद ऑन द प्लेन. ओ वाओ, फर्स्ट प्लेयर ऑन द प्लेन. जहांदाद आई थिंक नो चांस Jahandad, no chance. Wow. LQ Blood has no chance. All right. And Nawaz? नवाज शुड बी फाइन Oh, मतलब डेंजर wow. जोन That is a surprise डेंजर for जोन me. में That is a surprise for me. डेंजर Of जोन में course, डेंजर जोन में yeah, of course, we have to keep it moving. बस इस point पे आके दोबारा discussion करेंगे. For me, that is a surprise. आपने देखा. Should be fine, right? Okay. डेंजर जोन डेंजर जोन Oh, danger zone. Now it makes sense. Now it makes sense. ओके हो गया. इमाद, आपकी तरफ आते हैं. आई थिंक तो दो लाइक एक ऑलराउंडर आपके पास बचे हुए हैं एंड दो विकेट कीपर्स. शदाब खान, देन हसीबुल्लाह एंड देन I आजम don't खान. ओवर टू यू. think. Yeah, I mean Shadab and he's going. There's actually no other doubt about it about that. जा यार. Then we have Haseebullah Khan. Haseebullah Khan, I would still keep in the danger zone, not in no chance category because injuries hote he might still have a chance. And he also ओके. debuted for Pakistan. So and then Azam Khan, uh, I really want to put him in the oh he'll go category, but considering Pakistan cricket and its ways, I will put him on the plane. ओके, ऑल राइट. दो प्लेयर्स ऑन द प्लेन एंड ऑफ कोर्स एक डेड शॉट एंड दैट इज शदाब खान. आरम, अब टेबल रिवर्स होगा. आपकी तरफ दोबारा आएंगे. सरफराज अहमद भी हैव टू कंसीडर हिम बिकॉज दैट जब तक सरफराज अहमद खेल रहे हैं
his name would be Captain Circles. तीनों विकेट कीपर्स ही आपके पास बचे हैं, सरफराज अहमद, देन हारिस, देन मोहम्मद रिजवान. ओवर टू यू. या कराची को फिर से दीवार से लगाएंगे हम एज यूजुअल, एंड आई पुट सैफी भाई इन नो चांस, बल्कि उससे शायद जब ऊपर कोई होती कैटेगरी नो चांस है तो शायद उसमें डालते. जब लेकिन एंड इरफान. हारिस एंड रिजवान आई पुट शुड बी फाइन कैटेगरी में. रिजवान इज ओके. स्लाइटली लीनिंग टुवर्ड्स डेंजर जोन, बट शुड बी फाइन पे भी सही है, लोअर एंड पे सही रहेगा. All right, all right. Wonderfully put, wonderfully put. Okay, जी. I think so. हारिस को पहले कर देते हैं because Rizwan is kind of dwindling towards the danger zone. जैद आपकी टर्न है. शुएब मलिक, यासिर खान एंड खुशदिल शाह. यार तीनों का नो चांस कर दें आप. तीनों का नो चांस यार. मलिक देखो यार, इतना अच्छा फील्डर है, ऑलराउंडर है. अभी मेहरबानी लाहौर आप, को 2 मैच से मारेंगे. बस हो गया. Okay. Why Yasir Khan doesn't make case for you, Zad? Any case, like, क्योंकि आपने नो यार चांस. सैंपल साइज नहीं है अपना, साल बाद ओपनर्स बहुत है. हम्म. I साइन see, I see. वगैरह बहुत ओपनर है. हम्म. Okay. तला आपकी टर्न है, राइट? इन केस आपको सही से ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, एंड इन केस आवर व्यूअर्स, आई विल जस्ट naming them out as well. Iftikhar Ahmed, Sahibzada Farhan, and then we have Irfan Khan Niazi. Right. So is that Iftikhar or Abdullah Shafiq? इफ्ती भाई हैं, इफ्ती भाई हैं. Acha, Iftikhar. Okay. Yeah. So Iftikhar should be on the plane. All right. And moving on, who do we have next? Sahibzada Farhan. Oh, Sahibzada Farhan. LC. I think he should go in the category of danger zone because we already have openers, and Saim has done really well, and so he's जब going to be opening alongside Babar. और PSL का लेटर हाफ पे मजीद अच्छा चला जाता था, Yeah. एक कैटेगरी नीचे, बट he faded out. Yeah. And Irfan. And Irfan Khan Niazi should be in the danger zone too because बहुत सारी अगर injuries हो जाएं तो as a backup probably number 5 would be option. I see. सबसे लेकिन स्टैक जोन अभी तक डेंजर जोन चल रहा है. बहुत सारी इंजरीज के लिए आ सकते, देखा जाए तो नो चांस में कोई प्लेयर ही नहीं रहेगा. I mean, yeah, I guess, but like Man. someone like Sarfaraz, maybe Sarfaraz be injuries के बाद भी. I guess, yeah. I mean, the line is pretty blurry between danger zone and no chance because you don't know what could happen in terms of injuries and unavailabilities. या नाउ अरम की तरफ दोबारा रिवर्स होती है बारी. अरम जो प्लेयर्स आर हैदर अली, फॉलोड बाय सऊद शकील एंड ख्वाजा नाफे. Yeah, so Haider actually has surprised, but I have also always been rooting for him, and I've been pleasantly surprised by his improvement this year. But बहुत highly perform नहीं किया है उसने, but that we can say due to his position, batting order maybe. So I'd place him uh, above Rizwan and should be fine ओके, in परफेक्ट. my opinion. उसके अलावा Saud, my opinion currently बहुत सारे So Saud is एंड in साउथ danger के zone. बाद है ख्वाजा नाफे. आई थिंक दैट स्टार्ट अच्छा था, बट उसके बाद ही हैजंट लिव्ड अप टू. So again he is in danger zone as well, right? अपने 2 प्लेयर्स डाले डेंजर जोन में एंड वन इन शुड बी फाइन. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैद आपकी तरफ आते हैं. अब्दुल्ला शफीक.
नहीं, मैंने 2 दफ़ा डाल दिया, बट एनीवे एक दफ़ा कंसिडर करेंगे। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब एंड फ़खर उस्मान। आगा भी तो है ओह हाँ, आगा, सॉरी, यार। दे आर मैंने सो कल रमजान पे गोइंग उन्होंने ऑन। सेंचुरी मारी है। जस्ट Agha, Saim and Abdullah Shafiq to be precise. हम्म, आगा शुड बी फाइन। Oh, okay. That is an interesting one. साइम ओहिल गो और Yeah. अब्दुल्ला अगेन शुड बी फाइन। Abdullah in fine. Oh wow, that is an interesting one. Zaid ने अभी तक टिप्स डाले हैं इस टेबल में. Abdullah and Agha in fine and Saim will go. Uh, Imad आपके बारे है, right? Okay. Fakat Man, Yes. Babar Azam and then Abrar Ahmed. Right. So I'd put Fakhar Zaman on the plane because I know he hasn't performed that well, Okay. but I guess his record does guarantee him a place at least on the plane. Babar Azam, he's going. There's absolutely no doubt about it. And then Abrar Ahmed, uh, I mean, yeah, his performances show that he should be on the plane. So I would keep him there. All right. Cool enough. Uh, Aram शायद हमें join. Aram is back, I think so. Aram, are you back with us? Yes, I got disconnected. बस No worries. Okay, आपके बारी है and players are Wasim Junior, Arif Shakub and then Mehran Mumtaz. I uh, Wasim Junior should be higher up in the should be fine category. Not Mm-hmm. directly onto the plane, but because subpar season that he had good performances in the middle, but he didn't live up to his expectations. Considering the resources we have and Usama being the leading wicket taker, Arif Yaqub, I do not think stands a chance abhi, unless के बहुत ज़्यादा कुछ havoc create हो जाए. And who's the last person? I cannot. Mehran Mumtaz है. I'd place Mehran Mumtaz in should be fine category. Guys, can you hear me? I got stuck for a while. हाँ हाँ, अगली बात। Uh, okay. अरे मैंने कोई wrong तो नहीं put कर दिया? Correct करना है इसको. Nice. Say yes. Okay. एक मिनट मैं जरा आर्डर दोबारा सेट कर लूँ, वरना कंफ्यूजन हो जाती है. Zaid आपकी बारी है and your players are Naseem Shah. I think so तीनों obvious picks होंगे, but anyway, let's hear from you. Naseem Shah followed by तीनों Shaheen and then ओहिल Hadi. गो, तीनों ओहिल गो। तीनों ही will go. Haris Rauf पे भी ही will go. हाँ, Okay, डिबेट करेंगे, इस पे डिबेट करेंगे. Of course, Shaheen has तो to go. अभी आप कुछ कह नहीं सकते यार, उसका वो Haris is. इंजर्ड है वो। एक दो उसमें खेलेगा, अगर सीरीज तक Hmm. रिकवर हो जाएगा तो फिर ही बात कर सकते हैं। आ रहा हूँ। Okay, let's see. Then Imad आपकी बारी है. Zaman Khan, Hunain, and then two Shah brothers that are Hunain Shah and Rubaiyat Shah. Right. I'd place Zaman Khan on should be fine. Oh, okay, should be fine. Uh, Here we go. yeah. And the two Shah brothers, I feel they both of them don't have any kind of chance. Imad, sorry, repeat करना. Hunain and Rubaiyat का. I don't think both of the Shah brothers don't have any kind of chance, so no chance he category. Oh, really? Oh, really? That is a surprise for me. Anyway, इस पे डिस्कशन करेंगे, शाह ब्रदर्स पे डिस्कशन करेंगे. Uh, अरम आपकी तरफ से आ रहे हैं. Kind of obvious choices. Uh,
फ्रॉम देम थ्री आई थिंक सो जाहिद महमूद का ये अच्छा सीजन गया, बाकी तो इतना खेले नहीं. द प्लेयर्स बीइंग मोहम्मद हसनैन, उस्मान कादिर एंड जाहिद महमूद. Yeah, so Usman Qadir and Zahid Mahmood, I do not think जो competition है उसमें they'll have any chance, so I'll put them in the no chance category. Hasnan did not have a good season. एक तो वो coming back after an injury, but I'll still place him in the danger zone क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते हैं fast bowlers and their injuries. So I won't rule him out Yep. completely, but I'll put him lower down in the danger zone. All right. How about Zahid Mahmood? Zahid Mahmood will also go into no chance for me. बहुत competition spinners का. Okay, okay. Here you go. Zahid Mahmood has gone for no chance as well. सबसे stack zone along with danger zone चल रहा है अभी तक. Of course, हमने 18 players pick करने. We have to keep that in mind as well. And then we have done for Zed. Zed bowlers की category में हम दाखिल हो चुके हैं. First up is Hassan Ali, then Desi Time, and then Abbas Afid. यार हसन अली और डेजी इन डेंजर जोन. और अब्बास अफरीदी Okay, शुड बी फाइन. Abbas Afid should be fine. Here we go, here we go. थोड़ा सा इधर करके डाल देते हैं. Okay, हो गया. Alongside Rizwan. मुल्तान के सारे players एक ही category में हैं. अच्छा, anyway. We are left with five. We have been so quick five, bro. Anyway, किसकी टर्न है? इमाद की टर्न है. Hmm, हमने एक प्लेयर मिस तो नहीं किया. अच्छा, खैर anyway. इमाद आपकी टर्न है. Have your say around Shahnawaz Sahani followed by Ehsanullah. टर्न है. Have your say around Shahnawaz Sahani followed by Ehsanullah and then Usama Mir. Shahnawaz Dhani would go in the danger zone because he's Oh, played for okay. Pakistan before. I know अच्छा नहीं खेला but still. वो Ehsanullah, I Mm-hmm. would put him in should be fine. Now this might this choice might have some contentions, but he was in the contention Mm. very much pehle bhi. So, and if he's fit, he should be fine. And Musamir, as much as I think that he's not as good as a player, I think he will be on the plane. He will be on the plane. Okay, जी. अरहम, आप आमिर को डिस्कस कर लो एंड देन जैद आप हमजा मीर को. मीर हमजा को. अच्छा, I'll Yeah. go with Aamir first. So आमिर का ये before you asked us for this show मेरे दिमाग में ये बात थी कि आमिर अगर मेरे ऊपर आया I would say this कि as much as what he's done over the years, but this year he has actually done pretty good in my opinion. Or unexpectedly he's done good. I would be tempted to place him and should be fine, considering all that comes through Oh, with him taking back his retirement. So just to put in a bit of twist, I'll put him and should be fine. here we go, here we go. Of course, इस तरह के talking points आए to debate afterwards. जैद कैटेगरी का लास्ट प्लेयर that is मीर हमजा. यार नो चांस. Oh, really? हाँ हाँ. Danger मुझे zone बिल्कुल कोई का no खास chance. T20 टाइप बॉलर नहीं लगता मीर हमजा. तो इस I वजह से see. बस लाइक न्यू सीजन तो बॉल वैसे के अच्छा नवाज गया आई थिंक ही इज गुड इनफ फॉर T20. है. Okay. All right, all right. So, guys and viewers and listeners, of course, meanwhile, you can agree and disagree. We try to rush through first of all so that players सारी tables पे आ जाए. Now we have to consider कि 18 players discuss like 18 player final करने. Let's count. 6 are sure shot, then 6 are on 10, 12 हो गए. Now uh, should be fine कैटेगरी में 3, 6, 9 and 11 प्लेयर्स हैं. आई थिंक सो इन पे पहले डिस्कशन करते हैं. इनमें से किसको डेंजर जोन में डालोगे सो दैट हमारे पास 18 का पूल बचे निचले वाली 3 कैटेगरीज में. सो
आई थिंक सो पहला टॉकिंग पॉइंट बनता है रिजवान के राउंड सो अरम आई थिंक सो आपसे स्टार्ट लेते हैं डज ही गो इनटू द डेंजर जोन और नॉट This is the most trickiest decision I can think of right now. I know कि बहुत guts चाहिए होंगे decision लेने के लिए, considering his team played the final and he was the captain of the team. He had a pretty subpar tournament with the bat, but the person who is competing with for that spot, Mohammad Haris, did not have such a great tournament that he would bat Rizwan practically out of the side. So purely because of the fact कि वही जो हमारे यहाँ एक सुपीरियोरिटी का सीन बना हुआ है रैंकिंग का सो आई थिंक दे प्रेफर रिजवान ओवर हारिस कंसिडरिंग कि दे हैव ऑलरेडी बैंकिंग ऑन आजम एज द हिटर and the backup wicket keeper. So I think uh, I keep Rizwan in the should be fine category. I know Imad would be furious right now, but we'll have Haris in the danger zone for me. By anyone can disagree. Okay, all right. Of course, table is open for you guys, Imad and Zaid. Imad इसी पे रिजवान पे स्टिक करते हुए अगर आपकी कोई थॉट्स I mean, Mohammad Haris literally took you to the final on one hand, literally like Akela with her, like he performed so well. Except bowlers ne bhi kiya tha, but batters mein he was that one beacon that Pakistan team was missing, and then he came in and gave some match-winning performances, four consecutive games. I don't know how can Haris, a match winner like Haris, cannot be on the should be fine category or on the plain category, whatever. But I think that Mohammad Haris is a match winner. He needs to go and he needs to play in the 11 too. ओह here we go Zaid आपकी क्या थॉट्स यार वही अहम वाली बात है, काफी एक मुश्किल डिसीजन है। तो मैं करूंगा ये, मैं एटलीस्ट न्यूजीलैंड वाली सीरीज में दोनों को थोड़ा बहुत चांस दूंगा चेक करने के लिए कि किस एक को लेके जाना। अच्छा so again अभी in a way he is staying with fine right हाँ फाइन में कर दूं, दोनों okay को फाइन में कर दूं। okay next thing around आमिर को कोई डेंजर जोन में डालने वाले लोग हैं या अरम की तरह शुड बी फाइन यानी आमिर का डेंजर जोन बनता है यार, वो खुद में हाल कह चुका है कि वो नहीं नहीं रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहा। डाल दें डाल दें हाँ आई वुड ऑल्सो एग्री राइट नाउ कि आमिर को कंसिडरिंग के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है अब डेंजर जोन में जाना चाहिए। अच्छा गाइस हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर एक ही है शाहीन शाफरीदी सो लाइक एनी एनी बैकअप ऑप्शन फॉर हिम does I am making any case for Muhammad Amir or is it too lame? I don't think you have that kind of space in a World Cup squad as a 15-member low chahiye hota, so you need to just go with your top 4 or 5 fast bowlers at most. I don't think he comes in our top 4 or 5 fast bowlers, or even top Okay, here we 6. go. तो आमिर को लाइक क्या कहते हैं मेजॉरिटी के साथ डेंजर जोन में डाल रहे हैं एंड वी आर फेयर राइट ओके गाइस ऑफ कोर्स आपको भी कोई सरप्राइजिंग थॉट्स लगे थी इनिशियल पिक्स में तो ऑफ कोर्स यू कैन स्पॉट देम आउट ओके व्हाट अबाउट हैदर अली एनीवन ऑफ कोर्स टेबल ओपन है यार हैदर का बड़ा मुश्किल सी बात है क्योंकि उसने बिल्कुल एंड में पीएसएल के परफॉर्म किया है, तो उसकी भी वही वाली बात आ जाती है कि मे बी आप उसको एक दो सीरीज में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक मिडिल ऑर्डर आपका काफी फुल है। तो अगर हैदर जाएगा भी ज्यादा बैकअप जाएगा क्योंकि शदाब, आजम, इमाद, इफ्ती ये सारे अच्छी फॉर्म में। यहाँ आई वुड आराम से मे बी हैदर इन डेंजर जोन शायद। Oh, okay. One word for danger zone. Aram and Imad, Haider पे आपकी क्या thoughts हैं? Does he makes a cut into the 18s? As much as we love him, I think Haider Ali again after में 2-3 performances ही हैं. Again, as Ed said that there are series coming, we can try him, but for now, I think he stays in the danger zone.
For now, he will stay in the danger zone. Aram, Yeah, I agree. Considering कि बहुत competition है that he's competing for at the minute, और सब almost सभी in form है, so it will be very hard for him to get into the team. So अच्छा है we take someone else. We can have him in the reserves, but we can have his spot for some player that will benefit the team more. जहाँ पे हमारे पास seasoned players नहीं है या informed players नहीं है. okay. Guys, what are your final views about the Mehran Mumtaz? Of course, emerging breakthrough star है इस tournament का. Anyone, of course, mic Uh, open रखो. it it depends. Now, the thing is कि पाकिस्तान में ट्रेडिशन है कि फॉरेन PSL में जो परफॉर्म करता है उसको ले आते हैं. But like India, in India, we see that Ishan Kishan played 7 incredible seasons and then he was able to come. So, अब it's based on you कि आप जो है वो क्या prefer करते हैं. He has been really good, but I just have a question. It's a very honest question. Has he been that exceptional? Okay, we just bring him in अभी से ही. यार ऐसे मेरे ख्याल में इट डिपेंड्स ऑन इमाद डिसीजन टू कम बैक. अगर इमाद रिटायरमेंट Have वापस you नहीं seen? लेता तो आई थिंक Have मेरा you seen? मुमताज को. Mhm. And Aram, आपकी क्या thought? Yeah, I agree with Zaid. This decision is purely dependent on what Imad does with his future. Agar Imad does not agree to play again, so we'll have that talk of Arafat and Mehran, which obviously Mehran will have the front foot on because of the way he's performed. Arafat didn't get much time into, और I Nawaz को तो बिल्कुल ही out of the equation रखना चाहिए फिलहाल. हम्म. ओके गाइस, अच्छा एक स्मार्ट पे ये भी होगा कि पहली कैटेगरी जो टॉप कैटेगरी है, नो चांस में से किसी को थोड़ा सा आपका पास सॉफ्ट करना रहा स्टार्टिंग फ्रॉम. मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, कोई नाम आपके जहन में आ जाता है जिसके लिए कोई कुछ साफ सा पार्ट हो या डेविल एडवोकेसी कर सकते हो. फर्स्ट इज जहांदाद, देन सरफराज, देन शेख मलिक, मीर हमजा, यासिर खान, खुशदिल शाह, आरिफ याकूब, हुनैन शाह. इस पे थोड़ा सा मेरा था कि शायद ही माइट बी इन द डेंजर जोन. उस्मान कादिर, जाहिद महमूद एंड उबैद शाह. किसी प्लेयर के लिए साफ स्पॉट या किसी का कुछ केस बन सकता है यार टू आई हैव अ थिंक कैटेगरी मलिक बिट डाउन. को मलिक और पाकिस्तान क्रिकेट का वो जो ताल्लुक है ना, वो मलिक हमेशा ही डेंजर जोन में रहता है. मलिक का कभी चांस खत्म नहीं होता है. मसला ये है. तो आई थिंक उसको आप ले आए डेंजर जोन में. और तो या आई डू एग्री. हमारे चीफ सेलेक्टर ने मुझे लग रहा है शोएब भाई को जरूर लेके जाना है. पुरानी उन्होंने वैसे पुराना नहीं पुरा, सिलेक्शन करने ओके, के लिए पुराना एक वास्ता है बंदा उसका. नीचे आ दूसरा गया. उसमें रख देते. बट एनीवे गाइस, आई मीन देखो, अच्छा मैं जरा हुनैन की बात करना चाह रहा था. आई थिंक सो जैद ने पुट किया था नो चांस में. जैद देखो, हारिस रऊफ नहीं की नहीं इंजरी मैंने का अभी मैंने नहीं पुट पता किया. कि क्या सी में पता नहीं. हम्म. हुनैन शाह हैज बीन अ गुड फाइंड. तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब राइट अवे के उसे स्क्वाड में डाल दो और वट, बट नो चांस का मेरे नहीं ख्याल के ही इज दैट के उसे बंदा कंसिडर ही ना करे. ही हैज अ डिसेंट, क्या तला ने स्टैट बताया था कि मोस्ट डार्ट परसेंटेज अमंग्स फास्ट बॉलर्स. सो ही हैड अ गुड डिसेंट टूर्नामेंट. सो व्हाई नॉट इन द डेंजर जोन? लाइक एहसानुल्लाह भी हमने शुड बी फाइन में डाला हुआ है, राइट? अगेन ही इज अ इंजरी प्रोन प्लेयर, राइट? तो व्हाई नॉट हुनैन? तो या हैव योर थॉट्स अराउंड हुनैन, कोई भी अगर थॉट्स पुट करना चाहे. यार टू बी ऑनेस्ट मैं एग्री नहीं करता विद एहसान लाइन शुड बी फाइन से. जैसे भी मेरे ख्याल में उसका बेसिकली डेंजर जोन या नो चांस होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदे ने साल डेढ़ क्रिकेट नहीं खेली आप सीधा उसको T20 वर्ल्ड कप में लेके जा सकते हैं मेरे ख्याल में. हुनैन का यार, ओह, हुनैन से ऊपर फेयर ऑर्डर पॉइंट में, है. हाँ, हुनैन से ऊपर आई थिंक ऑर्डर में काफ़ी फास्ट बॉलर्स हैं. शाहीन, नसीम, राउफ, अब्बास, अफरीदी, वसीम जूनियर, जमान खान, बहुत लोग हैं जो कि आई थिंक ये इससे ज़्यादा आगे हैं टीम. तो इसी वजह से आई थिंक कि ओके. हुनैन की जगह नहीं बनती बिल्कुल नो चांस.
प्लस उसका पीएसएल को बहुत बड़ा ब्रेक Okay, थ्रू all सीजन right. नहीं गया सके जिसकी वजह से आप फॉरेन टीम में ले आए। एक डिसेंट सा सीजन था। Hmm. Mm-hmm. Okay. Achha, with Uh, Ehsanullah, I would say so, that mm-hmm. it was subject to the series, the four series, right? Netherlands, Ireland, England, and obviously subsequently New Zealand. So it was subject, आई थिंक or नेदरलैंड्स वाली कैंसिल वगैरह हो गई थी या पोस्टपोन हो गई थी। Achha, okay. Acha? It is Oh, subject okay. to whether he performs there or not. And that is also subject to the fact if he's fit or not. So it was based on all that. I was saying that because he was so good in the last PSL, and he was being talked about as our pacer in the 2024 World Cup last year. I think that he Hmm. deserves a place in the series that is happening before the World Cup, not in the World Cup itself. Hmm. So I guess, Yeah, yeah. yeah, that actually puts him in the danger zone if I were to change my pick. Okay, all right. Now, Abdullah and Salman Ali Agha मेरे ख्याल एक ही जगह बनेगी. Am I fair to say? कि नहीं? 18 रुकनी स्क्वाड में. मेरे हिसाब से शायद दोनों की ना बन पाए। Oh, here we go, here we go. आई थिंक इन पे डिबेट करते हैं लाइक एनीवन के लिए केस आई बनाना चाहता है. हम्म. किन के लिए? जा आराम पहले आप अपनी थॉट पुट कर दो कि दोनों की जगह शायद क्यों ना बने. हाँ मैं ये कहता हूँ कि हाँ क्यों ना जायद बने। अपना माइक आई म्यूट थिंक करना. अब्दुल जा एक जा तो जरा अब्दुल्ला जायद ने की जिस एक्टिंग. पोजीशन पे भी पीएसएल में खेला है और जितना खेला है, आई डू नॉट थिंक इट एडवोकेट्स फॉर हिम टू बी पार्ट ऑफ आवर टी20 स्क्वाड एज ऑफ नाउ, अनलेस के इफ ही इज अ पार्ट ऑफ द सीरीज एंड ही प्लेज अ गेम और टू एंड ही डज बहुत अच्छा कर लेता है, स्प्लेंडिडली वेल। आगा also वही case, because if you look at our team combination, we'll have our openers almost set. One down पे there is a Jamal, and if we play Shadab at 4, so I do not think कि Agha comes into the lineup at that stage. और जहाँ तक स्पिन ऑलराउंडर वाली बात है तो आई थिंक इफ्ती कवर्स दैट पार्ट एज वेल। सो आई थिंक कि कंसिडरिंग कि हमारे रिसोर्सेज कितने स्लिक हैं, आई डू नॉट थिंक कि बोथ ऑफ देम विल बी इन कंटेंट। they will be in contention, but I do not think they will be in the squad. अच्छा तो अहमद का माइक म्यूट है। हाँ हाँ, जैद बोलो कह बोलो, जैद एंड इमाद आपके अच्छा थॉट है. यार मेरा ख्याल है कि आई थिंक आपके पास नंबर 3 पे भी एक जगह खाली है। मैं हाँ अभी इसी पर एक आर्टिकल भी लिख रहा था, तो आई डोंट थिंक नंबर 3 की कोई खास क्लियर कट चॉइस है। पहले बाबर थी लेकिन फिर बाबर ने ओपन इतना अच्छा किया कि वापस उसको ओपन ही खिलाना बनता है। तो आई थिंक के ओके. नंबर 3 वाला जो स्पॉट है खाली है, उसके लिए आई वुड थिंक के अब्दुल्ला या आगा में से कोई एक खेलेगा। हारिस को किधर खिलाना है तुमने? मुझे ये बताओ. हारिस बैकअप होगा, हारिस की जगह नहीं बनती 11 के अंदर। Oh, here we go, here we go. Now that is a हारिस की जगह hard नहीं यार, topic. एक्चुअली आप उसको 11 नहीं खिलाए हम। पहले आपकी आपकी कारलें बनती है हारिस एहेड, मतलब जायद आप इन अ वे ये कह रहे हो कि अब्दुल्ला एहेड ऑफ हारिस, राइट? आप इन अ वे यही कह रहे हैं, है ना? तो इमाद, हाउ वुड यू डिफर विद दैट अगर आपकी डिफरिंग थॉट्स? I mean, I just think you don't drop players who have took you to finals and who have been match winners. And इस तरह के जो players होते हैं, they tend to go out of form too. And then and also a lot at one point I feel that even Haris isn't even out of form at some point because उसको use नहीं किया गया सही तरीके से. He has been mismanaged as well. I know that it's a World Cup, it's a shaky position number 3, and इस तरह के player पे आप chance ना लें. But I don't know, it's probably my bias that's leading me to say that he's such a match winner. He has been a match winner that he kind of has to Yeah, yeah. be has to be there. But in Okay. terms of Abdullah and Salman Ali Agha, I feel that Jed Bhai is right. The number 3 position is shaky, and one of them has to be this at least in the बैकअप 3 जो कि जाएंगे 15 के अलावा.
या तो मैंने आगा को डेंजर जोन मेरा में डाल दिया मेरा एक है। क्वेश्चन है. हाँ श्योर 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 आराम श्योर। I think we are overlooking the fact कि हमने फखर जमान को we have put him on the plane. So अगर वो he's a part of the team तो ये कहाँ खेलेगा? नंबर 3 अगर डाइसी है for all the other players, फखर जमान को 6 पे खिलाएंगे क्या? गुड क्वेश्चन यार मैन, वैसे लव्ड इट। अगेन फखर बताओ जमान जैद और वैसे बताओ। हारिस की बात हो तो हारिस को आप खेल पे खिला सकते हैं। फखर को मैंने नहीं रखा वैसे भी यहाँ पे ऑन द प्लेन में। फखर मेरी हिसाब से तो डेंजर जोन में बनता है यार। हाँ डेंजर जोन में बनता है। फखर की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, प्लस फकर आप उसको जाया करते हैं फकर एट टीम के मैक्स लिए। मैं इधर डालूंगा पर्सनली पर्सनली पर्सनली। कोई मेरे से पूछे तो शुड बी यार फाइन। आई नो डेंजर जोन में भी यार डाल सकते हैं उसको या बट तो ओपन आंसर कराना प्लेन वाला मतलब उससे तब नहीं। उन्होंने ओपन कराया नहीं, उससे जब वो उसकी पीक खत्म हो गई तब उसको टीम के साथ लेके फिर रहे हैं, तो उसके साथ भी ज्यादती करे ना, आगे टीम के कॉम्बिनेशन हो फिट बैठता कुछ बिला वजह का उसको ये एक भी है। रखा हुआ है कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है कहीं तो बस। Uh, अब बताओ Personally, I guys। would go with Fakhr over Abdullah and कौन सा था दूसरा in contention? We had Agha and Abdullah in contention आगा for the आगा number 3 spot. I आगा। I would personally go with Fakhr above both of them, considering वो इमाद वाली जब logic थोड़ी बहुत कि big match player, he does things that anyone else in the team cannot do. T20 has to be his most forte sport, and number 3 should be his spot. अगर हम हारिस को नहीं खिला रहे तो आई थिंक कि नंबर 3 पे फखर जमान शुड बी प्लेइंग. वो he'll win you games, that is for sure. He'll have patches in between, but he can win you games on his own. So I think यार वैसे Fakhar देखो should be टूर्नामेंट। in the should be हाँ fine category, हाँ and टूर्नामेंट जीतने के लिए Abdullah and कि Agha पांच both मैच। should be in the danger zone. ये मेरा opinion है. हाँ सेम वैसे सेम यहाँ सेम बहुत सेम बात आई हो एम रही है ऑन बिग सेम। मैच प्लेयर की, तो इतने बिग मैच प्लेयर रख के भी हमने पिछले 4-5 साल में कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। अब I अब actually have a अब case इसमें study इस कैप्टेंसी का पूरी चीज सवाल पर. है। अब इसमें I think कैप्टेंसी और टैक्टिक्स से भी सवाल है ना। प्लेयर रखने से तो कुछ नहीं ना होने लगा। हाँ इमाद right. सॉरी So मैंने आपको इंटरप्ट किया। yeah, no, no problem, no problem. The thing is कि जो 2021 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें IPL हुआ था just before the the tournament. And what India did was कि like उन्होंने बहुत ही ज़्यादा IPL पे डिपेंडेंट सिलेक्शन कर दी थी, and it kind of went south for them, and because they dropped all of their main spinners, and then उसके अलावा कुछ उन्होंने मिडिल ऑर्डर में भी कुछ वो इस तरह के प्लेयर्स दे गए थे. So I don't know. Obviously Zaid bhai might be right, but I just think banking on one tournament and form might go a bit south for us. But again, Fakhr Zaman की जहाँ तक बात है, he bats out of position and everything, but I don't know. He's done well for Pakistan पहले, and he's established. I just think कि इतना ज़्यादा squad में changes वगैरह. I don't know. I'm confused myself, but I think at least should be in the should be ओके fine category. ओके गैस अच्छा अब जो शुड बी फाइन कैटेगरी है ना उस पे फोकस करो। हमने 3 प्लेयर उससे निकालने हैं क्योंकि अगर 3 निकाले तो हमारे पास 18 बचेंगे। वेरी क्विकली अरम जैद और इमाद अगर आप एक एक प्लेयर निकालना चाहो कोई भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरम आप अपना प्लेयर बताओ जो आपको इस कैटेगरी आर्ड नजर आया। यार आई थिंक के कंसिडरिंग के जो हमारे 3 प्राइमरी पेसर्स हैं उसके बाद दो हमारे पास जो बैकअप पेसर्स होंगे, मैं अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हटा रहा क्योंकि वो अब मैं बोल चुका हूँ, तो आई विल गो फॉर समवन एल्स राइट नाउ. आई थिंक के अब्बास, जमान एंड वसीम में से वसीम एंड जमान मेक द कट फॉर मी. अब्बास अनफॉर्चुनेटली डजंट. एक तो अभी वही जो इंजरी वाला सीन हुआ था, ही डिडंट डू टू वेल इन द टूर्नामेंट. So I think I'll put both of them ahead of Abbas, and अगर किसी को इस कैटेगरी से निकालना हो तो I'll personally go with Abbas Afridi. जैद ओवर टू यू। यार आई थिंक जमान की तो आई थिंक जगह बनती है टीम में। जमान की बिल्कुल बनती है। ओके वसीम जूनियर
एंड अब्बास अफरीदी को मैं निकालूं शायद। अच्छा, वसीम एंड अब्बास दोनों को निकालोगे? ओके। इमाद। कितने को निकालना है आप बता दो, एक को निकालना है, दो को निकालना था? टोटल 3 को निकालना, लेकिन एक को आपने फिर 2 बता दो, ठीक है, दैट इज फाइन। इनमें से कोई भी एक निकाल दो फिर दैट्स आप। फाइन। इमाद, व्हाट अबाउट यू? Yeah, I would also mirror Aram's thought. I think once again वो I think मैं एक ही mantra follow करे जा रहा हूँ match winning वाला, but Wasim Junior is a player who kind of saved you in both of the world tournaments, 2022 World Cup, 2023 World Cup. I mean, he didn't save us, but we saw that he performed really well coming at the back end of the tournament, and I guess he rises up to occasion, so I would keep him. And as Aman Khan, he provides a very different option, and he's played for Pakistan as well काफी ज़्यादा as compared to Abbas Afridi, not वैसे very ज़्यादा. So I would keep Abbas Afridi out. ओके, ऑल राइट। जस्ट टू रिकलेक्ट माय थॉट्स, अगर मैंने गलत पुट कर दी थी। मेहरान मुमताज पे सबका एग्रीमेंट है कि शुड बी फाइन कैटेगरी, राइट? ये वैसे आई वुड से अगर वो बैकअप है इन केस इमाद अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं लेता, तो मे बी आप उसको डेंजर जोन में कर सकते हो। नहीं, जस्ट कंफर्म कर रहा था, इस पे डिबेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं कैटेगरी कंफर्म कर रहा था। You already have three spinners अभी से, तो I think आप उसको danger zone में डालेंगे. It is because as Zaid bhai said, it is subject to Imad's retirement. हम्म ओके। अच्छा, एज ऑफ नाउ जब हम ये वाली बात कर रहे हैं, तो 18 प्लेयर हमारे पास हो चुके हैं, लाइक बॉटम 3 कैटेगरी में। सो लेट्स हैव अ रिवाइंड। अगर किसी की कोई और डिसएग्रीमेंट ना निकली या फंकी आइडिया ना आया, तो देन वी विल बी रैपिंग दैट अप, और यही हमारे सोशल पे भी जाएगा। Starting with Shaheen, of course, our captain, then vice captain Shadab Khan, Saim Ayub, and Babar openers. Haris, of course, fingers crossed for his good return. Naseem Shah, of course, a no-brainer, the best pacer on form right now in Pakistan. Above than Shaheen, I would say as well. Then Imad Wasim, a big if, but I can see it happening. I can see it happening. मैंने 2 महीने पहले बोला था कि he would take the retirement back. Azam Khan, a no-brainer again. Iftimania, कुछ लोगों के डाउट्स थे पीएसएल के शुरू होते हुए, बट ही हैज कंप्लीटली डिबंक्ड थे। मेरे ध्यान में स्टिल कोई नहीं था। I still think at bigger level he needs to have some moments like that जो अभी तक नहीं परफॉर्म किए। रिसेंटली उसे अच्छी रन्स भी मिले, बट न्यूजीलैंड की सीरीज में कुछ मैच फिनिश करना बनते थे। बट एनीवे, ही इज ऑन द प्लेन। अबरार अहमद, नो ब्रेनर। उसामा मीर थोड़ा सा था कि पीएसएल कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा बिकॉज ही started it one or two matches, but of course he has to be a part of our plans. रिजवान पे काफी अच्छी डिबेट हुई। He is in a fine category. Of course, 3 times finalist and whatnot. Haris, for me, is in the XI for me personally. Zaman Khan, again, a wonderful option to have. Wasim Junior is in part of my squad. Abdullah Shafiq, bit में, but I can see कि इसका केस क्यों बनाया जा सकता है। मेहरान मुमताज, अगेन एक आउटलैंडिश थॉट्स आएंगी। जो भी फाइनल स्क्वाड बना उसमें भी एक प्लेयर ऐसा होगा कि सम आईब्रोज माइट बी रेस, बट अगेन एक तरह से इन केस, क्योंकि वो हमने इमाद का ये ऑप्शन पुट किया हुआ कि इमाद इन केस नहीं होता तो हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर एक ही बचेगा, एंड दैट वुड बी मेहरान। नो नवाज एट ऑल। एंड फखर जमान इन माय स्क्वाड। ऑफ कोर्स एक्सआई में अभी नहीं बनता। न्यूजीलैंड की सीरीज बहुत अच्छी खेल जाता है, तो ऑफ कोर्स, बट ही हैज टू बी इन पार्ट ऑफ द स्क्वाड, क्योंकि आप एक्सआई से मैचेस जीतते हो, स्क्वाड से टूर्नामेंट्स जीतते हो, एंड प्लेयर्स लाइक देम हैज टू बी पार्ट। सो गाइस, राउंड द टेबल अगेन चलता हूँ। एनी डिसएग्रीमेंट ओवर एनी प्लेयर जो लास्ट 18 हमारे बन रहे हैं? तला, ओ सॉरी, तला तो आज हमारे साथ आए नहीं। अगेन अ शाउट आउट टू हिम। इमाद, आपसे स्टार्ट करता हूँ। Yeah, I think we debated on this quite a lot. I think this is fine, but I just have one
One concern, but obviously I won't say कि उनको team में लेके आए, but we don't have fast bowling all rounders in this lineup. Obviously, we can make a case for Shaheen being that floater against spinners, but we don't have any fast bowling all rounders in this team. But I'm still not शाहीन putting और in नसीम अकेले Amir मारेंगे। Jamal Faheem because they haven't guaranteed the ये देख लें हम अपने आप लोग अपने फायदे के लिए अब शाहीन को ऑलराउंडर नहीं मान रहे, जब मर्जी मान लेते यार, ये गलत बात है। नहीं, नहीं I'm शाहीन not saying कि वो all-rounder है. Yeah, I'm just saying कि he can be a floater against the spinners if things go south. जब 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 ओके जैद आपकी कोई अभी भी आपको लग रहा है कि यार एक आधा प्लेयर इस कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे आना चाहिए फाइनल 18? यार ऐसे तो कोई नहीं, लेकिन जो क्या कहते हैं, जेन से पॉइंट ही निकल गया जो मैं कहने लगा था। यार मेरे ख्याल में मुझे रोजा लग रहा है आप आराम से बात अच्छा करें। एक मिनट, एक सवाल मेरे ज़हन में ऐसे बहुत रैंडम है, शायद आप लोग हंसने लग जाएं, एंड दैट इज हैदर अली एट पोजीशन नंबर 3. ओके आई एम सॉरी बिफोर यू गाइस किल मी ऑफ. नहीं यार, उसने लाइक पीएसएल में अगर उसने परफॉर्म किया होता जो 2 मैचेस खेले तो फिर मैं भी, लेकिन वो नंबर 6 पे खेल रहा है अगर, तो उसको नंबर 3 में तो ना खिला देना आप। ओके 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 ऑल राइट. अरम वो जस्ट टू रैप दिस सेगमेंट. कोई ये हम कोई वही काम डिसएग्रीमेंट? करेंगे जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इफ्तिखार के साथ करती रही है और फिर कहते हैं कि परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा. सो आई थिंक ये फिर वही काम हो जाएगा हैदर के साथ भी. बट आई एग्री विद इमाद वाला पॉइंट भी. बट एक मेरा जो पॉइंट है इसमें, आई कैन सी द लॉजिक बिहाइंड इट, बट पर्सनली आई वुड नॉट हैव अब्दुल्ला in the should be fine category in the 18 in my opinion, considering कि जो हमारे पास other options available हैं. तो I don't think कि Abdullah should be there. I love Abdullah. He's a great player. I think he makes the case for the next World Cup when we are preparing for it. जब a lot of players will get away from our main team. So I think then Abdullah would be the prime player to come in. यार But I think अच्छा एक मिनट, considering जो अभी हाँ, अब्दुल्ला की जगह फिर आप ख्वाजा नाफे को वाइल्ड कार्ड एंट्री दोगे? लाइक यू वुड बी ब्रेव टू टेक दैट? I was thinking of including a fast bowling all rounder. I think Imad was right कि हमने miss किया trick by not having one in the team in the 18. I think वो balance जो squad को provide होता है उससे, because we never know where things go in the future. हम इंडिया में हम जो है वो spinners की तैयारी करके गए थे to take wickets all of them via spinners, और एक भी नहीं मिल पा रही थी. So फिर हमने फास्ट बॉलर्स पे रिलाई किया था. आई थिंक वही वाला कोई सीन ना हो जाए, इसीलिए बैकअप पे आई थिंक एक पेस ऑलराउंडर होना चाहिए. आई डू एंड वो नॉट नो हु इट शुड बी at this moment. There could be a case for Amir Jamal. I don't think he gets into the team somehow in the squad, but I obviously बहुत tough call है, and I don't think इतना कोई बहुत brave decision लेंगे ये लोग. But I think considering the spot Abdullah is competing for and the chances he has, कि क्या probability है कि he'll get into the team or he'll be needed for the team ahead of a pace all rounder, वहाँ पे फिर वो injury वाला factor of the pacers और the balance of the team वाली चीज़ अगर हम consider करें, so I'd have him over Abdullah Shafiq. I think anyone can agree or disagree, but मेरा ही opinion है. I agree यार with that. Again, आई जरूरी नहीं डोंट है कि अभी आप डाल दो. Like he should be your option to consider. यार, ज्यादा लेकिन आपको क्या आपने लगता है? मत इसलिए कि वो आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं ना आप किसी को भी डाल दोगे टीम में। किसी को भी क्या मतलब? यार आमिर जमाल से रिवर्स ना हो रही है, बॉलिंग नहीं होती उस बंदे से, आपने उनको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बना दिया। टू बी ऑनेस्ट आमिर जमाल से बेहतर ऑप्शन मेरा I हाल mean, फहीम अशरफ है। I would always हाँ have Faheem Ashraf over Amir Jamal. I mean, Amir Jamal की bowling बहुत shaky है. I'm very sorry to say. You Faheem Ashraf, you सही have है. some sort of security, but at this You have point security with my a person bowling 130 and swinging it absolutely nowhere, bowling straight into the wicket. Uh, I don't, I still, don't care कि वो security है या नहीं. The thing is, नहीं. My point is कि you can have Faheem ahead of Amir Jamal. I don't argue that, but we need a
फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ये मेरा बेसिक पॉइंट ये था कि हाँ ahead of Abdullah we need a fast bowling all-rounder. जब जब यार फेयर लेकिन पॉइंट। फिर अगेन फहीम का कोई खास उतना अच्छा सीजन नहीं गया ना, हम जमाल का क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए अब क्या जानदाद खान को भी ना खिला देना आपने, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर जरूरी तो नहीं है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना। प्लस फहीम मैं की जो करती बात है सिक्योरिटी वाली, मेरी लेवल में फहीम एज अ बैटिंग ऑलराउंडर आता है, नॉट एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, एज अ सिक्स बॉलर बनता है मेरी लेवल में फहीम। ओके। वैसे शायद आप लोगों ने बात Yeah, कर भी I दी said हुई है the कि हम। security part. I said the security part हाँ with the fears of having Amir Jamal in the lineup. मतलब I'm not saying कि फ़हीम अशरफ को आप लेके आए, but I just think कि अगर आमिर जमाल को लेके आए तो इससे बेहतर है फ़हीम अशरफ को लाएं। आमिर जमाल when उसने फाइनल ओवर कराया था, but इसके अलावा like last season eliminator में he performed well against Ahmed with the हमें ball हमें with the ball. I don't think हाँ with the हाँ ball हमारी I टीम। don't think he's performed that well. आई थिंक सो आमिर जमाल, मुझे लग रहा है ये अगेन प्रिडिक्शन की तरफ जा रहे हैं हम, प्रिडिक्शन शायद कभी बाद में करें। मुझे लग रहा है कि आमिर जमाल को ये लोग डालेंगे 18 वाले स्क्वाड में। ओके गाइस, सो जस्ट टू रिवाइंड द फाइनल स्क्वाड: शाहीन चाफेदी, शदाब खान, फाहिम अयूब, बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, देन इमाद वसीम, followed by Azam Khan, Iftimania, Abrar Ahmed, Usama Mir. Spin bowling options: Rizwan as a backup wicketkeeper, followed by Muhammad Arif, Zaman Khan, Muhammad Wasim Jr., Abdullah Shafiq. Controversial choice is in Mehran Mumtaz, a slightly bold choice again because हमें कुछ factor consider करना पड़ा था. And Fakhar Zaman is in the part of final 18 XI of all-rounders. Then viewers, we would be intrigued to know your thoughts, your agreements, your disagreements. Please feel free to drop. So, hope you loved this show. I really loved. हमें बहुत अच्छे टॉकिंग पॉइंट्स अभी से भी मिले। ऑफ कोर्स डिबेट पाकिस्तान में रह रहे हैं, आखिरी दिन तक खत्म नहीं होंगे कि ये वाला प्लेयर क्यों नहीं गया, तो वो वाला प्लेयर होना चाहिए था। बट फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ, पीएसएल खत्म हो गया, हमारी तरफ से 18 मेंबर स्क्वाड ये है। Drop your thoughts, and of course that will go out on socials. I am very much thankful to Aram. I am very much thankful to Zad. I am very much thankful to Imad as well. Thank you so much, guys, for joining. And on that note, myself, Ahmed, along with these wonderful fellas, are saying goodbye to all of you. Viewers, jitna salamat rahe. Good luck, Pakistan cricket. Good